Yo, what's up, everybody? Welcome back to another episode. So, I discovered something new, or like I found information that I thought, like, whoa, that really blew my mind. So, I always thought that when two countries go to a war, like when a war happens, so when a war happens, two countries just start fighting. Like that's what fighting is supposed to be. You are pissed at, at your neighbor or your enemy, whatever, and you guys start fighting. You start throwing bombs. Tomorrow soldiers, like your soldiers are killing the other soldiers. It's like that's what I thought, but apparently that's not the case. Before a war happens, these like representatives, like the leaders of the countries, they sit down, they write some rules, uh, that you can do this, you can do that, you can use these methods, you can, like there are rules when a war happens. But whoa, what if, how the fuck there can be rules in a war? That's just stupid. Like what? The more I learn about the world, the more weird this world gets. Like there's no fucking logic. If you ask anybody, it's like there any rules in fights? Like maybe in fights, but like in a war, what the fuck? There should not be any rule in wars. You're fighting, you just go. Let's fucking go, bro. Like damn. This information really like blew my mind. I'm like, और कितनी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम कुछ और सोचते हैं, but in reality they are something else. I'm assuming a lot of things. We are never gonna know what goes on in the world like fully. We don't know. We just live in this little window, and हमारी दुनिया उतनी ही होती है. Like maybe just तुम जिस शहर में रह रहे हो. For like the people who live in big cities, उनके लिए तो पूरा शहर भी नहीं. Like I don't know what goes on in Delhi. There's no fucking way I can actually know what goes on in Delhi. Like पूरी दिल्ली में. No way. There's no chance. So just like that in the world, what goes on, we don't know. We'll never know. But I'm gonna tell you something today. So I have a story. I was thinking about I was thinking about doing this, like telling you guys this story for a long time. But I was thinking like, should I tell it or not? But fuck it. I'm gonna tell you guys story. I'm gonna tell you guys the story. So the story is from 2011 when I was 10 years old, and the story is about when I got blackmailed for money at age 10. As a 10-year-old, I got blackmailed for money. So how this shit happened? So I was 10 years old. I was in sixth standard. Uh, I was hanging around with bad kids. I just got like admitted into a government school for the first time. Sixth and seventh standard, I went to a government school. So when I went to the government school for the first year, I started hanging out with the bad people because like bro, like government, like in government school, like I think like all kids are so fucked. And I don't know why, bro. It's just पता नहीं क्या सीन है. I mean, obviously there are good kids too, but I was not that good kid कि मेरे को जहाँ अच्छे लोग दिख रहे हैं मैं वहाँ जाऊँगा. It's like मेरे को तो लफंडरों के साथ ही घूमने में मज़ा आता था हमेशा से. So that's the crowd I chose. So long story short, I was hanging out with bad kids who do shady shit. So that was my life. It was fun. I actually got to see like how the world operates, bro. Because we used to see बच्चे पागल हैं भाई. Like बच्चे पागल होते हैं, सही बता रहा हूँ. और the older kids, they are more fucked up. Like the 9, 10th, 11th, 12th वाले बच्चे होते हैं, they are more fucked up. They used to fight fucking every day. We are seeing fights every day. भाई कोई ईंट फेंक के मार रहा है किसी को. Like people are fighting in the toilets. Like that kind of shit. Classroom में लड़ाइयाँ चल रही हैं भाई. Desk तोड़ रहे हैं बच्चे. It was like wild experience. सरकारी स्कूल का बड़ा experience बड़ा सही था मेरा. So I started hanging out with bad people. So I had this friend. I'm not gonna tell his name. Let him be anonymous. I'm gonna call him he. I'm just gonna call him he. ठीक है? So one day we became really good friends. पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था वहाँ पे, तो मैं अकेला आता था. But he used to live like मेरे घर के पास. So we became very good friends. And we started hanging out. हम सारी चीज़ें साथ में करते थे. Like मतलब स्कूल जाना आना लंच वगैरह सब कुछ like हम सब कुछ साथ में करते थे. So we became very good friends. So ऐसे टाइम बीतता गया. अराउंड like 6th क्लास जब ख़त्म होने वाली थी सर्दियों में,
uh, he started bringing like money from somewhere. I don't know how. So उसके पास बढ़िया भाई 500,000 रुपए लेके आने लग गया वो. So bro, like I'm talking about 2010. Now 500,000 rupees maybe they are not enough. बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है वो for kids, because I see bro like kids nowadays they eat fucking pizza bro 1,000 रुपए का. But उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था. 1,000 रुपए were like yo 1,000 रुपए. It's weird how money works bro. In इस दुनिया में पैसों की कीमत गिरते जा रही है. Because at one time, let me tell you, my dad's salary was 1,800 rupees in 2000, when he came to Delhi. His salary was 1,800 rupees. I just got a pull-up bar in 2023. I got a pull-up bar जिसकी value 1,100 रुपए है. Like what the fuck happens in between? Like what the fuck happened in these 20 or 22 years कि पैसों की value इतनी ऊपर नीचे जा रही है. I don't understand money. But yeah, anyways, so he started bringing a lot of money. भाई हम बढ़िया मजे मार रहे हैं भाई, like घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं. Because as a 10-year-old, when you have like 500, 1,000 bucks, it's like a lot of fucking money, and you feel like you can buy everything. Because तुम्हारी सोच ही जाती है भाई ये क्या खा लें हम, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, फलान ढमकाना. So हम यही करते थे भाई, सुबह सुबह निकल जाते थे भाई हम सुबह 4 बजे. He really liked to smoke cigarettes for some reason. The friend जो पैसे लेके आ रहा था, he really, for some reason, he was really into smoking cigarettes. He's the one who like I actually like for the first time I smoked with him. So वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे मेरे घर पे आता था. एंड क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो 12 बजे का स्कूल होता था. इट वाज लाइक इवनिंग शिफ्ट वाला स्कूल, बिकॉज दिन में लड़कियां जाती थी. एंड इट वाज ऑल बॉयज स्कूल. सो 12 to 6 it was 12 or 12:30, I don't remember, something like that, to 6 p.m. it was boys. So हमारे पास टाइम होता था भाई 12 बजे तक, 11 बजे तक हम बढ़िया घूम सकते हैं, स्कूल जाने की ज़रूरत तो है नहीं. So he used to come at my house like 4:30 बजे, 5 बजे. और लाइक मेरे घर वालों को लगता था कि आई एम गोइंग फॉर फिटनेस, लाइक मैं भाई सुबह जॉगिंग पे जा रहा हूँ फलान ढूंगा. और आई like at this age I can even process how my parents let me go out of the house when I was 10 at 5 a.m. Like bro, I could have been fucking raped. You never know, I could have been fucking raped. You never know. But yeah, that's what we did. He used to come at my house 4:30 बजे. पहले वो अकेला आता था, so पहले सिर्फ हम दोनों थे. So he used to come at my house 4:30 5 बजे. Then we used to go out. He used to buy a whole fucking cigarette की डब्बी bro, like a full cigarette की डब्बी. गोल्ड फ्लेक नाम था उस सिगरेट का. आई डोंट नो इफ यू गाइस नो व्हाट इट वाज. गोल्ड फ्लेक की डब्बी लेके ब्रो हम, मेरे को तो भाई फूकने भी नहीं आई थी. मैं माउथिंग करता था. आई यूज्ड टू जस्ट टेक अ पफ एंड ब्लो द स्मोक आउट. दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू. ही यूज्ड टू स्मोक इट लाइक अ रियल पर्सन. सो भाई इमेजिन सुबह 4:30 बजे 2-10 साल के बच्चे सिगरेट फूके जा रहे हैं. और हमें तो पीनी तो आती नहीं है, बस हम पफ लेके फूके जा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं सिगरेट. वी जस्ट वांटेड अ एक्सपीरियंस. बढ़िया एक्सपीरियंस था भाई वो. एंड देन आफ्टर स्मोकिंग लाइक 2-3 सिगरेट्स, मेरे घर से जिस जगह पे हम जाते थे, हम लाइक वी यूज्ड लाइक स्मोक और हम एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे चाय और रस्क मिलते थे. सो देन वी यूज्ड टू ईट दैट. ये करते करते दिन हो जाता था. सो वी यूज्ड टू, अब क्योंकि दिन हो गया तो 10 साल के बच्चे तो लाइक यू कांट स्मोक सिगरेट्स इन लाइक पब्लिक. सो जितने भी हमें फूकनी होती थी, वी यूज्ड टू लाइक स्मोक इट बिफोर लाइक द सन राइजेस. सो 6 बजे से पहले वी यूज्ड लाइक puffing on the New Delhi streets. Bro, like I would like if like somebody told me ki bro, like if you can go back in time or like watch your childhood as a movie, क्या सही सीन होगा ना ब्रो. लाइक हमें देखने को मिलेगा हम क्या क्या करते थे. अलग ही मजे आ जाएंगे. So yeah, that's what we did for months. बढ़िया मजे चल रहे थे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं ब्रो, लाइक फूक रहे हैं. And yeah, we did that. And but एक दिन आया वो जब he stopped bringing money. He was like कुछ हो गया होगा, I don't know, he never told me, but like पैसे आने बंद हो गए. And we were like dry as fuck. And when you go from living like that बढ़िया मौज मारते हुए, so you want that more. So मैंने उसके पैसे खाए थे, you know. So now it's my turn. So I started stealing money from my mom's purse. Because like मेरे को क्या पता है, I'm like it's a very stupid thing to do. I started stealing money from my mom's, same amount जितने वो लेके आता मैं भी उतने लेके आने लगे, 500,000 रुपए हर हफ्ते.
एक हफ्ते आराम से चल जाते भाई 1,000 रुपये, एक हफ्ते से ज़्यादा ही हम। लाइक फिर हमें वीडियो गेम एडिक्शन हो गया। लाइक इफ़ यू डोंट लिव इन दिल्ली, आई डोंट नो इफ इट्स अ दिल्ली थिंग, बट यहाँ पे वीडियो गेम पार्लर्स होते हैं। इट्स लाइक बच्चे वहाँ पे जाके वीडियो गेम खेलते हैं, एंड लाइक पूरा पार्लर ही होता है वो वीडियो गेम का। वहाँ पे टेकन 3, कॉन्ट्रा, ये सब चलता था, मुस्तफ़ा ये सब चलता था। और भी बहुत सारे गेम थे, WWE, कॉल ऑफ ड्यूटी, गॉड ऑफ वॉर, ये सारी गेम्स चलती थी वहाँ पे। 2 दुकानें थी, एक में सिर्फ गेम्स चलती थी, टेकन 3 वगैरह, और एक में प्ले स्टेशन था। सो जो प्ले स्टेशन वाली जगह थी वहाँ पे वो तुम्हें मैगी सर्व करता था, यू हैव टू लाइक तुम्हें पैसे देने पड़ते थे उसके लिए। सो ही यूज्ड टू सर्व मैगी विद प्ले स्टेशन। Bro, that was if you ask a video game addict कि सबसे बेस्ट चीज कौन सी है, that's what it is. That's what it is. Maggie, eat Maggie, play video games. Super loser shit, but that's what we got really addicted to. So अब हम वहाँ पे जाते थे भाई, मेरे पैसों से हम ये कर रहे थे, वीडियो गेम्स एंड मैगी, वीडियो गेम्स एंड मैगी, वीडियो गेम्स एंड मैगी। दिन में स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से फटाफट भाग भूग के भाई लंच में भाग के आ गए। लंच, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई पूछता नहीं है ब्रो, लाइक यू जस्ट रन अवे। हम लाइक गेट कूद के भाग गए लंच में, एंड जाके प्ले स्टेशन खेल रहे हैं वहाँ पे। गॉड ऑफ वॉर खेलना भी नहीं आता, बट मैगी खा रहे हैं, खेल रहे हैं जैसा खेलना आ रहा है, GTA Vice City खेल रहे हैं भाई। एंड दैट्स व्हाट वी डिड, सुपर फन शिट, सुपर फन। लाइक फिर ये हमने किया बहुत महीनों तक। वी स्टार्टेड, हम लाइक या दैट्स व्हाट वी डिड, लाइक स्मोक सिगरेट्स इन द मॉर्निंग, प्ले स्टेशन, मैगी, खा पी रहे हैं जो भी मन कर रहा है क्योंकि पैसे इतने भरे पड़े हैं जेबों में। एंड बट व्हेन यू डू ऑल ऑफ दिस शिट यू अट्रैक्ट पीपल, यू नो, लोग तुम्हें देख रहे हैं कि यो ये क्या सीन है, ये कैसे कर रहे हैं ये सब, ये छोटे से बच्चे। सो बड़े बड़े बच्चे ये सारे भी they're like watching you, they're preying on you. And मैं तो डम बचा था बहुत ज़्यादा। So मैंने कुछ ज़्यादा ही पैसे, like I started stealing more money, like more money, because I was really enjoying it. So I started stealing more money and I was not getting caught. मेरे को लगा था मैं पकड़ा जाऊंगा, it's like वॉल्टर वाइट वाला सीन हो गया था। मेरे को मजे आ रहे थे, I was stealing money, I was having fun with my friend, and then we added one more friend in our group, and but वो हमारा दोस्त था, देन वो भी हमारे साथ आने लग गया। देन इवन द सेकंड फ्रेंड स्टार्टेड ब्रिंगिंग मनी, सो हमारे पास पैसे होते थे बहुत सारे। सो दीज ओल्डर किड्स, देयर वाज दिस गाय ब्रो, बड़ा ही नशेड़ी सा बंदा था, ही वाज लाइक रियली स्केरी, रियली फकिंग स्केरी। और एक और बंदा था जो हमारी क्लास में था। सो ही, आई डोंट नो हाउ ही फाउंड आउट दैट आई वाज स्टीलिंग मनी फ्रॉम माय मॉम्स पर्स, एंड आई वाज अ वेरी स्केर्ड किड। So if you can join 2 plus 2 together, you know what I'm about to say. So this nashedi guy and this guy who was in our class, they started to fucking scare me, like I'm gonna tell your mom. And मेरे को उससे डर नहीं लग रहा था. The main thing was, I mean obviously डर लग रहा था कि मेरी mom को पता चल जाएगा, but the other nashedi guy, bro, he was like fucked up. He used to be like, जैसे meth addicts होते हैं ना, that kind of fucking person. उसके मुंह में हमेशा गुटखा रहता था. I mean, this is like a 9th standard kid, like 10th standard का बच्चा था मेरे ख्याल से वो. उसके मुंह में हमेशा गुटखा भरा रहता था. And he used to be always high, 100%. He used to be always high. हमेशा हिलते हुए चलता था वो. और ये स्कूल है. This is what we are fucking seeing. This is fucking school. We are supposed to be learning things. और हम ये सब देख रहे थे. वहाँ पे लड़ाइयाँ देख रहे हैं, नशेड़ी बच्चे देख रहे हैं. So they started like, yeah, so they started blackmailing me. So एक बार कि हम तेरी मम्मी को बता देंगे फलान टाइम गाना, हम तेरे को मारेंगे, दिस दैट। आई वाज लाइक, मारने का सीन नहीं है, डोंट टेल माय फकिंग मॉम ब्रो, लाइक तुम तो मेरे को नहीं मार पाओगे, माय मॉम्स गोना किल मी। सो आई वाज रियली स्केयर्ड ऑफ माय मॉम। आई मीन ऑब्वियसली यू शुड बी, लाइक यू डूइंग समथिंग शिटी। आई वाज रियली स्केयर्ड कि फक लाइक इफ माय मॉम लाइक फाइंड्स आउट व्हाट्स गोना हैपन। सो आई गेव हिम मनी, लाइक एक बार आई थिंक 1,000 रुपये। सो 2-3 बार या फिर चला गया। सो एक बार आई रिमेंबर, चौथी बार लाइक फक, I can't keep doing this. Like why am I being a pussy? Why am I giving him money? So मेरा दिमाग फ्लिप होना चालू हुआ. I was like fuck. I was बहुत tense टाइम था ये मेरी जिंदगी का. Like such a pussy shit. Like I look back, I'm like क्या चल रहा है यार इस जिंदगी में, क्या चल रहा था. So one day he came like, मैंने उसको मना कर दिया. I was like, nah, I'm not giving you money. So he came to my house. He threatened me कि I'm gonna tell your mom, but he didn't, because you know, who the fuck won? He was never gonna tell my mom. There was just no fucking way. If he would have told my mom, that would have been way better, because इतने पैसे वेस्ट नहीं होते मेरे माँ बाप के जो मैंने उसको 3-4 हज़ार 5,000 रुपये दे दिए थे डर के. So
वो नहीं हुआ होगा, बट ही नेवर वांटेड दैट, ही जस्ट वांटेड द मनी. एंड जो हम मजे कर रहे थे उसका भी वो कर रहे थे. सो एंड माई फ्रेंड वॉज गेटिंग फ्यूरियस टू, who जो बैलेंस पैसे लेके आया था. He was like, bro, you gotta do something with this motherfucker. So I was like, okay, let's think of something. So like चौथी बार या पांचवी बार when he asked me कि give me money or I'm gonna tell your mom, I was like, fuck you, I'm not giving you money. So he came to my house, took me somewhere. एक पतली सी गली में, भाई दिल्ली में गलियां होते हैं पतली सी, ये 4-5 लड़के थे साइकिल पे, and like they started fucking like grabbing my collar वगैरह, bro. मेरी फट के चाल हुई थी, I'm gonna be fucking honest. I'm not fucking scared of anybody anymore, but like that was a very scary moment because you don't know these kids, bro. Like मैं अच्छे से घर से आता it's like, you know, मैं बड़े शरीफ घर से आता हूँ, and like I was never into this shit. उससे पहले मैं प्राइवेट स्कूल जाता था. I was like चलो okay, like आराम से लोकी के था, मैं लोकी बच्चा था, and you throw me into this, and so that was a very scary moment. And like, bro, like the way the universe works, I was like really scared. I was gonna give him more money कि fuck मेरे को like full bullying shit चल रही थी, bro. Like I was like, I'm gonna देने पड़ेंगे मेरे को, क्या करूँगा मैं. But that day I went home. The next day I tried to steal money and my mom caught me. And my mom fucking caught me. Like they didn't beat me वहाँ पे. They even I think even they were fucking pussies. They tried to threaten me, call पकड़ के पैसे दे वरना तेरे को मारेंगे, this that. And I got really scared कि because in the school you used to see कि बच्चे knife वगैरह लेके आते थे. I was like, yo, what if he fucking slices my face? What the fuck am I gonna do? You know? So I was really scared. So I was like, fuck, I gotta steal money again. So I went home that day really scared. सो गया मैं. Next day in the morning मेरी मम्मी छत पे कपड़े पसारने गई थी भाई, like सुखाने. And I tried to steal money and she came back. She caught my ass. And I was so relieved. I was so fucking relieved. She beat the fuck out of me. She beat the fuck out of me, bro. Chappal hi chappal, bro. I still remember that beating. Chappal. चप्पल थप्पड़ लात भाई, चप्पल जूते सब कुछ जो भी हाथ में मारता सब कुछ. एंड बट that night I slept like a baby because ये टेंशन पूरी चली गई थी मेरे दिमाग से. And my mom took me to that, मैं सब कुछ बता दिया नहीं मम्मी को. Like I snitched on that guy. Like obviously fuck him. I snitched on him. So I told my mom everything. She took me to उसके घर पे. And like भाई गंदी तरह उसकी मम्मी के सामने बेइज्जती. वो था नहीं शायद घर पे बच्चा. सो उसकी मम्मी को सब कुछ बताया, लड़ा भाई, बात चल रही है, लाइक मेरी मामा वाज लाइक पैसे चाहिए मेरे को मेरे वापस, तुम्हारे बेटे ने लिए हैं, दिस दैट. ब्रो वी नेवर गॉट द मनी बैक बिकॉज लाइक किसके पास है पैसे उतने, वो तो मैं. सो वी नेवर गॉट द मनी बट इट वाज अ वेरी रिलीविंग मोमेंट फॉर मी कि ओके भसड़ खत्म हुई. उस दिन के बाद से भाई क्या 4 में स्कूल जाता था मैं, जेब में बस 10-20 रुपये होते थे बट इट वाज लाइक टेंशन फ्री. 10-20 रुपये आई वाज लाइक इट्स ऑल गुड, मैं छोले कुलचे खा लूँगा बस. बट ये भसड़ नीचे जिंदगी में, like that really changed me as a fucking kid. That whole experience really changed me. I was like फालतू की भसड़, like I got myself into that shit. That's why I'm like now I'm like really careful like who I talk to, what I do with people. Like उस टाइम के बाद से I really became careful because I got to know कि कैसे बच्चे हैं यहाँ पे, कैसी दुनिया है. So I was like okay, you gotta live like that. मैं कभी जेब में पैसे लेके नहीं जाता उसके बाद. It's like I'm never fucking eating anybody's anything. I'm not making you spend your money. I'm not spending money on you, and that's how I still keep it. I mean, obviously there are still people in your life, you know. उनके साथ उन चीजें करते हो, but like, fuck, bro. But New Delhi is crazy. Delhi is crazy. I'm telling you, Delhi is fucking crazy. It's a crazy place. And the reason why I was even scared of that whole moment, like I said, crazy बच्चे. तुम लड़ाइयाँ देख रहे हो स्कूल में, बच्चे एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं भाई, कोई किसी का खून निकल रहा है किसी का, तो you get scared as a kid. I was fucking 10 years old. And when you are in that environment like all day long, 6 घंटे तुम ये सब कर रहे हो. I don't know what are the conditions of government school now, but उस टाइम पे तो बड़ी fucked up थी. और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे स्कूल में, जितने भी स्कूल थे सबकी वही कंडीशन थी भाई. And I don't know now. So yeah, that was my story. How I got blackmailed at age 10. Damn, bro. That was crazy. That was really crazy. Now looking back at that whole experience is like, what? And I never really, after that, I never really smoked cigarettes. बस उस टाइम पे पता नहीं क्या मेरे को शौक चढ़ा था. I was just like,
मेरे को हंसी आ रही है ब्रो सोच के क्या कर रहे थे हम ये सब क्या कर रहे थे but you know that's what you do when you're kids yeah so I hope you enjoyed the story thank you so much for listening I really appreciate you listening I'm gonna see you next week with something more